सो वेलकम स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में आपको दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 साइन एक्स इज ग्रेटर देन 6 साइन एक्स माइनस 1। सो इसको आप सॉल्व करना है, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज, सो लेट मी स्क्वायर इट ऑन बोथ साइड्स। 5 माइनस 2 साइन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। So if this is greater than this, what I am saying is इसका square is greater than इसका square. So is it always true? ठीक है। अब a greater than b है तो a greater than or equal to b है तो can I say a square greater than or equal to b square? So इसके ऊपर आप सोचना पड़ेगा। This is not always true. ठीक है। So now let us carefully analyze this inequation and see where this inequation can be squared. So इस तरफ जो है, इस तरफ स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो वी नो दैट दिस साइड इज पॉजिटिव। इस साइड जो है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो अगर इस साइड नेगेटिव है तो इट विल ऑलवेज बी लेस देन दिस, क्योंकि पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए नेगेटिव नंबर। सो इफ 6 sin x minus 1 is less than 0, then inequality always holds. Inequality always holds. इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। If 6 sin x minus 1 is greater than 0, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। Now I can square it on both sides, ठीक है। I can square it on both sides. So this is valid when 6 sin x minus 1 is greater than or equal to 0. So अब इसको सॉल्व करेंगे। So 5 minus 2 sin x को s बोल रहा हूं, is greater than or equal to 36 s square plus 1 minus 12 sin x. This implies 36 s square minus 10s minus 4 is less than or equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इन इक्वेशन आ गया। सो इसको सॉल्व करेंगे। आई एम डिवाइडिंग एवरीथिंग विथ 2। 18 साइन स्क्वायर माइनस 5 साइन माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन 0 इंप्लाइज द वेरिएबल लाइज बिटवीन द रूट्स। इसका रूट्स क्या है? s इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 प्लस 8 into 18, 8 into 18, 80 plus 64 is 144 by 36 by 2a. That is equal to 5 plus or minus 144 plus 25 is 169. So square root किया तो 13 आएगा by 36. That is equal to 18 by 36 is 1 by 2. Minus लिया तो 5 minus 13 is minus 8 by 36. Minus 8 by 36 is minus 2 by 9. So now for this inequality to be satisfied, my sign has to lie between half and minus 2 by 9. So sin x belongs to half and minus 2 by 9. So minus 2 by 9 में पहले लिखता हूं, so minus 2 by 9 to half, ठीक है। So sin x has to lie between minus 2 by 9 and half, but this is valid only when sin x is greater than 1 by 6. Only when sin x is greater than or equal to 1 by 6. So ये दोनों का common solution क्या है? This is the solution for this inequality, but this is the solution where this inequation is valid. So ये दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या है? sin x माइनस 2 by 9 एंड हाफ के बीच में होना चाहिए, sin x 1 by 6 से ज्यादा होना चाहिए। So effectively for both of them to be valid, sin x has to be lying between 1 by 6 and 1 by 2. So this is one part of the solution, ठीक है। And second part, if sin x is less than 1 by 6, this inequation is always true, ठीक है। आप इसको कंसिडर करने का जरूरत नहीं है। So sin x is less than 1 by 6 है तो
sin x less than 1 by 6 है तो this inequation is always valid. So sin x 1 by 6 से half के बीच में भी valid है, less than 1 by 6 में भी valid है. So effective solution. So आप देख सकते हैं एक solution है 1 by 6 से छोटा होना चाहिए, दूसरा solution है 1 by 6 से half के बीच में होना चाहिए. This or this. So what is the combined solution? Sin x तो -1 से छोटा तो नहीं होगा. So the effective solution is sin x has to lie between -1 and half. So the effective answer to this is sin x should lie between -1 and half. So again I'll solve this in one cycle. So कोई एक cycle ले सकते हैं. Let us take this cycle. So -1 और half के बीच में होना चाहिए. इसका मतलब -1 और half के बीच में होना चाहिए. ठीक है. So it has to lie between -1 and half. So can you see the values? ये pi by 3 है, ये 2 pi by 3. So x belongs to either 0, pi by 3 और 0 to pi by 3 हो सकते हैं, और 2 pi by 3 से लेके 2 pi के बीच में भी हो सकते हैं. ठीक है. From 0 to pi by 3 और 2 pi by 3 to 2 pi. So this is the answer in one cycle. So पूरा आंसर के लिए 2n pi ऐड कर लीजिए. Add 2n pi on both sides. So this will be the final solution to this inequality. So x belongs to 0 to 2n pi plus pi by 3, or x belongs to 2n pi plus 2 pi by 3 to 2n pi plus 2 pi. Okay, where n belongs to integers. So this is the final answer to this inequation. Thank you.